Go. Yeah. Hello, everyone. We are back after seeing like an amazing match of Manchester United. Now we'll also watch some mediocre teams playing, Liverpool and City. But I think for some people they are big teams, so we'll still watch it. So oh man, Liverpool has totally outplayed them. Totally outplayed them in the first 10 minutes. And I think it's already a big surprise that Ederson is dropped and Liverpool is playing too good at this moment. We were just talking in the last stream that जब City अच्छा खेला है in like proper Pep and Klopp eras, जब City I think even if my memory serves me right, ये जो season था where they just won it with 1 or 2 points and goal. Salah and Gakpo combined. Man, at this moment, it's too easy for Liverpool. Too easy. Like, ऐसा लग ही नहीं रहा कि सामने सिटी खेल रहा है. City have not turned up at all, and this is just first 10 minutes. And to be honest, Liverpool could have already had like 2-3. And it always pains when I see Gakpo scoring. Just because we had an option of 45 million Gakpo or 100 million Anthony, and we chose 100 million Anthony. So it always hurts. So, but yeah, Liverpool is just too good at this moment for us. Is there a hint of upset? No. I mean, why at this moment I don't understand why would you play like in high line against Liverpool when you are struggling so much and the pace Liverpool has. I don't think so. It's good for anyone to play highline against them. We also have DJ joining us now. DJ. I'm on. So अगर तो ये लेट्स से लिवरपूल जीत रहा है, ठीक है, Uh-huh. विच इज प्रीटी मच गोना हैपन आई गेस, तो सिटी वोंट बी इन टॉप 4, राइट? No. Who's fourth? रुक जा. City will be fourth. हाँ, सिटी अभी Hmm. अपडेट नहीं हुआ है. नहीं, किसका गोल डिफरेंस ज्यादा? तो अभी ब्राइटन और उन लोग का सेम है, द गोल डिफरेंस एंड एवरीथिंग, बिकॉज Interesting. So let's check. हाँ देख, अब सिटी फिफ्थ हो गया है Yeah, because करेंटली, Brighton अभी one अपडेट on हुआ. one, they won. सॉरी, नहीं नहीं, सिटी का गोल डिफरेंस तो कम हो गया ना, अभी सिटी ने खा लिया ना, तो देयर गोल डिफरेंस इज Uh, 4 yeah, City is एंड out of ब्राइटन top इज 4 5. then. Yes. दैट्स जस्ट क्रेजी, हु वुड हैव थॉट Yeah. कि ये भी हो सकता है. भाई साहब. बट यार क्या मतलब लिवरपूल हैव बीन सो रिलेंटलेस. हाँ मतलब दे हैव नॉट टेकन सिटी फॉर ग्रांटेड कि हाँ अरे वो ठीक नॉट है. बट द पॉइंट इज, ऐसा लग ही नहीं रहा कि सिटी खेल रहा है. आई नो. सिटी, कि मतलब जिस तरह से दे जस्ट कटिंग थ्रू देम एट दिस मोमेंट, या. कुछ कंपटीशन ही नहीं है. दिस इज टू इजी एट दिस मोमेंट. वेरी. ओह. दिस इज फन. दिस इज फन. बट लिवरपूल हैव आई मीन क्रेडिट टू देम यार. आई मीन दे हैव नॉट टेकन दिस मैच फॉर ग्रांटेड. आई मीन दे हैव मतलब कहते हैं ना दे हैव गॉन ऑल गन्स ब्लेजिंग कि हम्म. छोड़ना ही नहीं है मतलब. भाई साहब. अभी एंड डिड यू सी एडरसन गॉट ड्रॉप्ड? हाँ. फॉर व्हाई व्हाट रीजन आई डोंट अंडरस्टैंड. परफॉर्मेंस, which is रियली. interesting. ओए यार व्हेन वाज दिस हेडर वैन डाइक का अभी हुआ था We क्या. have a comment Parth is saying this is City, not Arsenal. Of course, it's easy for Liverpool. हैं? uh, But Arsenal gave away a 2-0 lead यार. I mean
हाँ, they think Pep should have left. Mm, there is a point where players get tired, especially these modern players, of just playing in one way, telling them कि you can only do this, you can only Hmm. do this. Do you think that it has come to that saturation point? If that is the case, then Pep should have left. Hmm. कि थक गए अभी और नहीं सुन सकते, कि तुम यही कर सकते हो. दे वांट सम फ्रीडम, न्यू आइडियाज. Yeah, and then I think even the teams have might have caught up. Like Mourinho के ideas. They I don't say they don't work, but teams they know about it. कि हाँ, Mourinho क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है. I think that way Liverpool have been very. I mean, it's too early to say, but I think Liverpool have been very smart. Like आई थिंक क्लॉप हैज बीन स्मार्ट. Klopp, right, yeah, right. Klopp has been smart. He knew that his high intensity football and heavy metal wala football is एंड very. इट्स ऑल्सो अबाउट द पर्सनालिटी ना. तुम एक पर्सनालिटी से थक जाते हो. ठीक है. Yep, yep, अभी yep. अभी लिवरपूल जैसा खेल रहे हैं. आई डोंट सी एनी डिफरेंस जो क्लॉप खिलाना चाहता था. तो इंटेंसिटी एंड ऑल ऑफ इट हैज बीन सेम. Same, yeah. जस्ट few tweaks over here and there, which is obvious with any manager comes in. Hmm. बट इन जनरल तो इंटेंसिटी तो वही है, और ये सेम प्लेयर्स थे जिन लोग का लास्ट ईयर इंटेंसिटी नहीं था. Correct, correct. Yeah, yeah. Agreed, agreed. But कैसा मतलब शुरुआत से ही I think they've बच already गए और had वापस निकला. अरे बच गए. 3 4 shots on target. कैसे मतलब यार, one pass and they are cutting through, हाँ मतलब कितना हाई लाइन भाई, कितना हाई लाइन. ओहो हो. Ripping them apart, man. They're बट tearing. वही है, मतलब दिस इज अगेन, एट सम पॉइंट व्हेन यू आर नॉट डूइंग दिस वेल, यू हैव टू Hmm. प्ले हॉर्सेस फॉर कोर्सेस. तो तुम लिवरपूल के सामने हाईलाइन नहीं खेल सकते हो फिर. You cannot ना. जब तुम ऐसे स्ट्रगल कर रहे हो और वो इतने अच्छे फॉर्म में हो, तो हाईलाइन खेलने का मतलब ही नहीं है तब. हाँ, ओ. especially when you have Gakpo and Salah, लुइस डियाज. Luis लुइस Diaz. डियाज लुइस डियाज आई थिंक स्ट्राइकर जैसा खेल रहा है आज. या कैसे गोल नहीं गया यार ये, हाउ सीरियसली. वेन डाइक मिस्ड 2. एक पोल पे लगा, एक ये दिस अ फ्री हेडर. अरे यार, दैट शुड हैव बीन अ गोल. ओ हो. स्कोर स्कोर एंड स्कोर. अरे कम ऑन यार, कम ऑन यार, कितना चांस, कितना चांस यार. अरे यार, आर्नोल्ड को ही मार देना था वो. लुक एट दैट यार, हट. इतना. हैव यू एवर हाँ. सीन सिटी लाइक दिस नेवर नेवर. अरे इन अरे. आवर रिसेंट मेमोरीज? आई आई मतलब भाई साहब, दिस दिस वाज. इज, मतलब इट पेन्स मी टू से दिस, बट ये मैंने देखा है बहुत बार लिवरपूल को करते हुए. बट इट हैज बीन अगेंस्ट यूनाइटेड, वेयर हाँ. यूनाइटेड हैड नो आइडिया हाउ टू प्ले अगेंस्ट देम. करेक्ट एंड वो करेक्ट. वो अभी सिटी के साथ लग रहा है. टचेस देख, 11 touches in opposition box for Liverpool and zero for City. वाओ. But this can also humanize the league this time around. के आई डोंट, मतलब एक ब्लिप जैसे लास्ट 3 4 सीजन से तुम मैच हार ही नहीं सकते थे. ठीक है. हाँ. तुम हाँ. एक भी हारे तो सिटी ले जाएगा. करेक्ट करेक्ट. ठीक है. दिस वुड नॉर्मलाइज द लीग इन दैट वे के लिवरपूल अभी भले उतना उन लोगों के पास 10 पॉइंट जो भी का लीड है,
Hmm. but they can also lose the matches. The other team will also lose the matches, and eventually, I hope that the title race would get tight, Correct. which we all would want to see, to be very Yeah. honest. And it also gives City some breathing space ना, नहीं तो uh, I think they have always been अरे You will see City spending big in January. yeah, at least they will वो Rodri का तो reinforcement लाएंगे ही. And I think even in summer also they will do some major overhaul. समर I में तो करेंगे ही, uh, बट आई थिंक अगर ऐसे ही चलता रहा तो समर तक पेप भी छोड़ देगा. hmm, बट वेयर डज पेप गो? yeah, that's a big question. I think maybe uh, which league is Probably left? back to Bayern. Bayern में हाँ yeah he can maybe to लिवरपूल में तो नहीं जाएगा. EPL में तो I don't think he'll go anywhere. ईपीएल में भी नहीं जाएगा. और ला लीगा में भी इवन नहीं ला जाएगा. लीगा में वही बार्सिलोना, सॉरी लिवरपूल नहीं, मेरे को बार्सा बोलना था. बार्सिलोना भी नहीं जाएगा हाँ वापस. हैंसी बार्सा हैज फ्लिक. फ्लिक एंड बार्सा वोंट बी एबल टू स्पेंड. बट बयान हम्म का भी वो है, बयान ऑल्सो वोंट स्पेंड द मनी ही वुड नीड एट दिस हम्म पॉइंट टू चेंज बयान. हम्म. I think I don't think he's out of ideas. It's just that the teams have caught on. हाँ, एंड इट हैज लाइक Yeah. दे कुड नॉट कॉट ऑन टू हिज आइडिया फॉर 6 years. 6 साल चलाया वो एंड प्रॉपर चलाया. I mean credit to him for that. But I think तो 5-6 गेम बहुत जल्दी है. Let's see how the season goes. I think they can still. It's City, right? अगर अगर कोई टीम 4 बार चैंपियंस, they have been 4 champions 4 times. क्या कर रहा है भाई? तुम उनको डाउट नहीं कर सकते हो. हाँ, you cannot actually doubt them this early. It might be a purple वो क्या बोलते हैं rough patch. बट मतलब द पॉइंट इज यू हैव नेवर सीन देम गो थ्रू दैट. Never, never, never. I think even when Guardiola came in, they were not this वो Hmm. bad. Hmm. This is because in लीव Guardiola, जब से इन लोग के पास जो एक पैसा आया है, राइट, Hmm. सिंस द ऑयल मनी, आई थिंक Guardiola के तो 3 सीजन पहले ले ले, सिंस दैट मैंचिनी वाला सीजन ले ले, जब ये Hmm. लोग पहली बार जीते, Right. तब से दे हैव नॉट बीन इन दिस कंडीशन where they would lose 5 matches on a trot like this. But Another पता reason है, uh, when it comes now, oil money was part of it, obviously. But if we go deep down as to what all, City had a great structure in all of it. है. Agree. I think none of us can deny that. कि Hmm. सिर्फ पैसा ही नहीं, स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा बना है. बट देन जब तो वो टीम सोचता है, ठीक है, मैंचीनी वाला टीम, ठीक है, Hmm. और उनमें तू जब कुछ कुछ प्लेयर सोचता है ना, तो वो प्लेयर का मेंटालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी वाले Why? प्लेयर्स थे, Yeah, ठीक है. yeah, yeah. Agreed, ठीक है, agreed. जिस वजह से ये लोग वो कोर बना पाए. नहीं तो अगर ये लोग सिर्फ पैसा डालते एंड जो और मेंटली स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स नहीं आते, राइट, हु वांटेड हम्म टू फाइट, हु वांटेड टू टेक इट टू नेक्स्ट लेवल, तो हम्म, फिर ये वो नहीं होता. जैसे ये थे, जाबिलेटा वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड प्लेयर, या ठीक है, और इन जाबालेटा, लोगों अग्वेरो. दूसरी विंग पे जो था, दोनों फुल बैक्स जो इन लोग के तब थे, जाबिलेटा और एक और था. अरे या हाउ डू आई फॉरगेट दैट गाय यार. एक क्लीशी था, दूसरा कोलारोव करके एक था. कुछ तो ठीक है, डेविड सिल्वा. डेविड सिल्वा या ठीक इवन है, जेक. व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेयर ही वाज. एंड ऑनेस्टली इवन जो हार्ट एट दैट तो टाइम. हार्ट अरे यार. अरे मिडफील्ड में दिस गाय याया टूरे भाई साहब. याया टूरे, हाँ हाँ. ग्रेट प्लेयर, ठीक है. तो ऑल दिस प्लेयर्स कुड यू नो कम इन एज अ लीडर एंड फिक्स दो स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो प्लेयर्स लेवल पे तुमको सॉर्ट आउट करने थे. एंड यू हैड सो मेनी लीडर्स इन द ड्रेसिंग रूम फ्रॉम सिंस देन, हम्म. यप व्हिच यप. कुड मेक इट पॉसिबल फॉर देम. ऐसे तो इन लोग में नहीं तो देख, पहले तो वो भी खेला है, वो ब्राजीलियन कौन था, रूबिनो नहीं, रॉबिन्यो रॉबिन्यो हाँ. रोबिनो. हाँ, तेरे को उसका रॉबिन्यो. स्टोरी पता है ना? हाँ हाँ, आई नो आई नो. वो तो ऐसा था वो. मतलब इतना कंफ्यूज कोई कैसे हो सकता है यार.
व्हाट प्रेस यार, व्हाट प्रेस, हाँ बट लिवरपूल इन। दिस इज ऑल्सो समथिंग अ पेप टीम ओनली कैन डू, कि इतना हाई प्रेस जिस तरह से चल रहा है, एंड दे आर स्टिल एबल टू प्ले अराउंड लाइक अ जोक। आई थिंक समटाइम्स दिस हर्ट बिकॉज थोड़ा आपको टैक्टिक चेंज करना चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली आप बॉल लूज कर ही दोगे। सी हो गया फाउल, फॉर थोड़ा श्योर, या। थोड़ा थोड़ा आई थिंक ही शुड, आई डोंट नो, बिकॉज दिस इज समथिंग आई फाइंड विथ मोस्ट ऑफ द मैनेजर्स टुडे, ये जब से वो रूल आया है ना प्ले आउट फ्रॉम द बैक का, सबको वो चढ़ गया है। और आई थिंक इट वही हो गया ना कि अब जो मिडफील्डर में तुमको जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज मिलते थे, जो तुम्हारे हाँ। सेकंड बॉल फर्स्ट बॉल लड़ने जाएंगे, कुछ भी हम्म। हो जाए, ठीक है, वो रहे नहीं है उस तरह से। करेक्ट करेक्ट, आई थिंक प्लेयर्स लाइक, आई थिंक कैसेमीरो इज लास्ट ऑफ हिज काइंड, वो मिलेगा नहीं अभी। आई वुड कैसेमीरो तो इंक्लूड रॉड्री आल्सो टू दैट कन्वर्सेशन, जो बहुत अभी फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल जीतने जाएगा ही जाएगा। मतलब अभी जैसे है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड समवन लाइक स्कोल्स, समवन लाइक लैम्पार्ड, समवन लाइक रॉय, बुस्केट्स। बुस्केट्स, रॉय कीन। वो टैक्टिक से ही हटा दिया है वो, मतलब हम्म। क्या ही टैक्टिक है, मेरे को समझ नहीं आता है। पहले द बॉल विच वी यूज टू सी राइट, 30 यार्ड 40 यार्ड से मिडफील्ड से डायरेक्ट बॉल आ रहा है स्ट्राइकर को, एंड स्ट्राइकर गोल कर रहा है, वो समवॉट अ वेरी कॉमन गोल टू हैपन। यप विंग्स यप। चेंज होना और ये वो। हम्म। अभी when that happens it becomes like a huge thing कि oh my god how क्या is बोला। that pulled off, ठीक है, कि राइट इतना राइट। दूर पास इतना एक्यूरेसी से, which was a norm earlier। हम्म। विंग चेंज करना was not considered such a tough job. Today wing change करना is considered as a beautiful pass, आई नो, आई नो, आई नो। beautiful diagonal ball in commentators language। ये आदमी कितना मतलब डिट्टो एडरसन जैसा नहीं लगता है? एडरसन चाइना में हो तो, कौन ओटेगा? जो इन लोग का कीपर है अभी सिटी का। ओटेगा चाइना। हाँ वो फीफा, वो नहीं, वो फीफा में ग्राफिक खराब हो गया है। हाँ। ये अगर एडरसन पेस के ग्राफिक्स में होता। एक बार बट जीरो, प्रेस पता जीरो है, अटेम्प्ट, जब जीरो अगर अटेम्प्ट। अगर पेस को ना हम्म। लाइसेंस मिल जाता, ठीक है, जब पेस इनिशियली आया था हम्म। फीफा के कंपटीशन में, इनिशियली मतलब एक उसका दौर आया था, तो हम्म। उसका लाइसेंस नहीं था उसके पास, आई थिंक तब सिर्फ इटालियन लीग का लाइसेंस था, ठीक है। हाँ हाँ। लेकिन अगर तब उसके पास सबका लाइसेंस होता, अगर वो जीत पाता ना, इट वुड हैव बीटन फीफा। बिकॉज मेरे को वो 3 साल का बहुत अच्छे से पीरियड याद है, वेयर जो पेस के ग्राफिक्स थे, जो पेस का गेम प्ले था, इट वाज was बेटर। miles above FIFA। एंड पेस, और उसमें तुम बहुत सी चीजें कर पाते थे, देयर वाज लॉट फॉर यू टू डू, मैनेजर मोड और ये सब में, हम्म। जाकि इफ वी रियली थिंक ऑफ इट तो फीफा में मैनेजर मोड में तुम सालों से सेम वही चीज चीजें पे ही ही करते आ या एग्रीड एग्रीड, रहे। वही चीज होती रहती है, ये सही लोग जो बात है। अभी लेके आएंगे ना कि प्लेयर का वो मैनेजर और प्लेयर एक साथ बैठ के बात करते हैं, एंड हाउ दैट नेगोशिएशंस गो एंड ऑल हाँ ऑफ हाँ इट, हाँ हाँ। राइट, ये तब आ चुका था 2010 9 10 हाँ में हाँ, पैस 9-10 लेके में आ गया पैस था। लगा था, यस यस यस। हम्म। और उन लोग का जो सिंगल प्लेयर गेम प्ले था, अगर मतलब जो वो एक सिंगल प्लेयर करियर मोड जो था ना, वो हम्म। तो कुछ कंपैरिजन ही नहीं था विद वो फीफा। बहुत अच्छा और था। तभी फीफा ने फिर वो निकाला था फॉर 2 3 इयर्स, तेरे को ध्यान हो, वो पता है एक स्टोरी निकाली थी हम्म। इंस्पायर्ड ऑफ दैट किड। या हम्म। तब फिर इन लोग ने वो निकाला था उसके उसमें। वेयर इज पार, तो क्या क्या? आ रहा है। बट हाउ डू यू लिव विद दिस इंटेंसिटी यार, जितना ये लोग रन कर रहे हैं, पता नहीं हाउ है। डू यू कीप डूइंग इट? आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई सीरियसली। शूट, अच्छा शूट। एलेक्स हंटर, यस, एलेक्स हंटर वाला स्टोरी। हाँ एलेक्स हंटर, एलेक्स यस। हंटर, राइट राइट राइट, फॉर द जर्नी। अब हाँ। उसमें भी बट कुछ चीजें वही थी
कि उसमें कुछ चीजें गिवन ही थी। इन द फर्स्ट सीजन तुम कुछ इंजर्ड होते हो या सिलेक्ट नहीं होते हो, फिर तुम एले गैलेक्सी खेलने जाते हो। फिर हाँ हाँ तुम्हारा कहीं एक बड़ा ट्रांसफर होता है, तुम 6 महीने की इंजरी पकड़ लेते हो। या एंड यार अगर मैं खेल रहा हूँ फीफा, ठीक है, मेरे को कोई शौक नहीं है मैं जाके एले गैलेक्सी पे आई नो लेके, आई नो आई ठीक नो है। एंड उस मोड में तुमको हर गेम खेलना है, राइट। ठीक है। हम्म। तो वो इट वाज जस्ट अ यूजलेस थिंग। तुमको अगर यही करना था कि उसको एक लोअर लीग में डालना था, तो डालना था तुम इंग्लैंड या कहीं पे भी उसके छोटी लीग में डाल देते। हाँ एक्चुअली कॉन्फ्रेंस लीग, वो लीग 1 लीग 2 चैंपियनशिप हाँ, ज्यादा अच्छा है। ठीक है। यहाँ तो तुम भाई फ्रांस लीग में डाल देते या कुछ कर देते। मेरी मम्मी है ना, इतना स्वीटली ना, मैं फाइनली उनका कमेंट एक्नॉलेज कर रहा हूँ, हर स्वीट पे आके स्वीटली आके हेलो लिख के चले जाएंगे। फिर वो पूरे वो स्ट्रीम पे, या तो मेरे टीवी पे या उनके फोन में, फिर अपनी स्ट्रीम ऐसे साइड में चलती रहेगी, एक लाइक कर देंगे, फिर ऑब्वियसली वो सुनते नहीं है पूरा कि और उनको, पर फिर वो देखते हैं, हाँ चलो मेरे बच्चे को व्यूज आए उसके लिए। दैट इज सो नाइस। बट एक मिनट ना। फिर तू भी क्यों म्यूट पे चला गया था? डीजे तू म्यूट पे, आई डोंट नो इफ यू नो। अरे सॉरी, वो गलती से हिट, अरे यार कम ऑन, सेकेंड टाइम दे आर हिटिंग द पोस्ट। आ कम ऑन यार, 4 गोल पड़ गए होते अभी तक। आराम से। That slow-mo gameplay was irritating. Yes, yes, you're right. That slow-mo gameplay was irritating. किसमें वो, अच्छा एलेक्स सेंटर में। Hmm. हाँ। Alex Hunter was in a way inspired by उसको जिस तरह से बनाया भी था ना वो, इन अ वे इंस्पायर्ड बाय राशफोर्ड। ऐसा था क्या? हाँ, and मतलब it is fitting that it didn't work for more than 3 years. हम्म। वो चूंकि वो उसका मतलब पूरा, उफ। उन लोग ने जो प्रोमो भी निकाला था ना उसके लिए, उसमें भी उन लोग ने उसको मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते हुए बताया था, फर्स्ट प्रोमो जो उसका था। ए ए लवली, ए कम ऑन यार। तेरा कौन से मिनट पे है? 34 39। अच्छा, इसके लिए। ओके। ए ए फाउल है। मतलब ये लोग लिवरपूल प्लेयर्स भाई, एक 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 जन दो जन को खींच के ले जा रहा है सिटी के, मतलब दे आर नॉट एबल टू इवन स्ट्रिंग 2 passes प्रॉपरली अटैक में, फटाफट फटाफट करके।
एक ही मिनट में मैं आ रहा हूँ। हम्म। ओह, नाइस बॉल। Sorry, viewers, if I'm not able to speak anything, it's because Liverpool are playing that intensely. हम्म। वो बॉल यार। ओए फाउल। ए हट। हाउ मेनी चांसेस यार, कम से कम 8 से 10, 10-12 चांसेस बनाए इनने, लिवरपूल ने, इजीली। और अरे पहले 10 मिनट में उतने इन लोग ने बना लिए थे। डू यू सी सिटी कमिंग बैक? सिटी कमिंग बैक? इट्स वेरी यार, मतलब आई थिंक लिवर मे बी देयर इज अ वेरी स्लाइट चांस, बिकॉज इट इज सिटी, दैट इज द ओनली रीजन। बाकी कोई और हम्म। टीम होती तो नो चांस। We can never rule them out, या is the आई thing. आई आई गिव दैट। वी हैव टू, मतलब प्रीमियर लीग 4 बार जीतना इज नॉट अ जोक। वो भी बैक टू बैक जीते हैं। दे हम्म। स्कोर, ओए। बच गए। बट आई थिंक लिवरपूल नीड टू स्कोर एटलीस्ट 2 or 3 मोर। हाँ, they cannot go easy. हाँ। एडरसन को ड्रॉप कर दिया भाई, मतलब बॉल्स है यार, मतलब आई डोंट नो, स्मार्ट और बेवकूफ क्या बोले। हम्म। आई डोंट थिंक ही हैज बीन दैट बैड यार। 4 गोल में इट वाज नॉट हिज फॉल्ट, इट वाज, ही कुड नॉट हैव डन एनीथिंग यार। क्या करेगा वो। लुक लुक एट दिस गाय, व्हाट नॉनसेंस ये हालैंड। क्या टच था वो। आई थिंक ही शुड हैव ड्रॉप्ड हालैंड। हेलो। सॉरी यार, ये प्रिपरेशंस के बार बार फोन आते रहते अरे नहीं नहीं, वो तो जरूरी है ये तो। मैच तो अगले वीकेंड भी है। शादी तो एक हैं। ही है। हम्म।
Yeah, he should have dropped Haaland यार. He should have played वो Foden or maybe De Bruyne को as a वो false nine खिला के. We I have few comments coming in. 37 minutes and City still doesn't have a shot on goal. The earth is healing. But don't. uh, yes, you're correct. Beautifully painful. Akash is supporting both the teams today as he hates Arsenal the most. 2 out of 4 goals was Ederson's fault. Oh, is it? Which I goal think यार? that Which goal? Tottenham में? I I don't see. think ये फ्रैंकफर्ट वाले मैच में 2 out of 3 maybe वो ये बोलना था. चैंपियंस लीग हाँ. फेनरबाश में. ओके. Haaland is frustrated. He's frustrated because he's like that. He's losing his battle with Van Dijk. Not even one ball he has Hmm. been able to win from him. But do you think if Mbappe instead of Mbappe, Real Madrid would have signed Haaland, it would have worked better for both the parties? I don't think so. I don't think Haaland has that mentality of वो Madrid वाला. Not that Mbappe has. I have no मतलब पता नहीं यार बिकॉज Mbappe. एम्बापे के बाद तो वो लोग इम्बैलेंस ही हो गए पूरी तरह. हाँ मतलब इट्स वो ये जो है ना आपका जैसे द फैक्टर विच वाज मेकिंग मैड्रिड क्लिक नो वन नोज व्हाट वाज द फैक्टर. वो रोनाल्डो था तब तक पता था कि ओके इट इज ड्रिवन हाई ऑन मेंटालिटी एंड टू सम एक्सटेंट the tactics were also there, but if you see the last season they won the Champions League. It's वाइट there was पे जीते हाँ लास्ट ईयर हाँ तो वो लोग. there was no tactics. आपके पास हम्म, is the quality of players which has driven it. अभी क्रूस रिटायर हो गया. मॉड्रिच has he's now old. So I don't know. I mean, how long can you मतलब कितना कितना लेके जाओगे आप? हम्म. Part says yes, Haaland would have been better than Mbappe for Madrid. I think Part, it is high time now you come on the stream. Mm. But Carlo, do you think Ancelotti sack coming soon? Not yet. I think he has done way मतलब बहुत अच्छा किया है उसने. So, what is that But shitty pass, man? it's Madrid is not a club who will be thinking on that lines, right? And that is why also they are Madrid. I agree. नहीं I नहीं agree. तो वो लोग जब लास्ट टाइम भी एंचेलोटी सैक हुआ था, हम्म. ठीक है, तब भी नहीं होना चाहिए था टेक्निकली हाँ तो. हाँ 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 ठीक बात है. तो सही है. तो हालैंड एंड विनी's ईगो क्लैश would have been inevitable. आई थिंक अभी भी हो ही रहा है ना वो तो. या एम्बापे विनी का ईगो क्लैश एज मच एज दे डोंट वांट टू शो, वो हो या ही रहा है. एंड द बिगर अनफॉर्चुनेट थिंग फॉर देम इज आई थिंक we have all started to realize that Bellingham is probably not as good as everyone thought he is. He's not able to maintain a tempo of the game, create those chances regularly, and करेक्ट. he's nowhere near the level of either of them, Cruz हम्म. or Modric. मतलब उन लोग के साथ कंपेयर करना भी गलत है because we none of us knew Modric इतना अच्छा प्लेयर बनने वाला है. Correct. He actually kept improving, and I don't see that Modric के happening. फर्स्ट सीजन में he was rated as the worst signing ever for In La Liga, yeah, I know. and that the same thing happened with Vinny also. Yeah. ठीक, तो you never know with Madrid, but I think they have to sell one of them to get some balance. Hmm. बिकॉज दोनों को लेफ्ट से आना पसंद है, दोनों का गेम बहुत एक जैसा है, दोनों का सेल्फिश गेम है, तो तुम दो प्लेयर तो ऐसे नहीं चला सकते. I agree. Yeah. And there's no मतलब आगे जाके ना मतलब between the three of the strikers there is no tactic that is working कि वो अंदर एंड कटता है वो बाहर जाता है वो तेज तेज भागने लग जाता है खाली टू लेके. बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक सो उन लोगों को कोई टैक्टिक में खिला भी सकता है. क्योंकि अगर क्या मतलब खिलावा. उन लोग को एक जो टैक्टिक में ना फिर भी एक प्लेयर होता है जो एक फ्री रोम में होता है. या उन लोगों को पूरा अटैक वो वैसा 3 का 3 रूम में और जो एक दूसरे का सिंक भी नहीं करता है. ठीक है, कितनी बार he मैंने जब भी doesn't उन लोग के छोटे छोटे मैच मतलब कभी भी जब भी मैचेस देखा है थोड़ा बहुत भी उन लोग का, आई हैव सीन सम टाइम्स के दोनों तीनों या एटलीस्ट विनी और एम्बापे एक लाइन में खड़े होते हैं. हाँ हाँ यस
They, अरे यार, there is no one who is actually making a run inside. No one is हाँ। going inside. कुछ भी नहीं होता. I agree, I agree. हम्म। And that is, I think, one of the reasons they lost against Barcelona. हम्म। There's no connection. Oh, एक तो और उन लोग ने अभी उस वजह से उन लोग का जो एक्चुअल में बेस्ट मिडफील्डर है वो भी उसको उस पोजीशन पे खिला नहीं पा रहे, दैट इज द वेलवर्डे। वेलवर्डे बहुत अच्छा प्लेयर है, नहीं है? हम्म, वेलवर्डे का कौन सा जो मैं मैच देख रहा था उसमें राइट बैक खेल रहा था शायद तक वो। तो एंड आई थिंक क्रूज शुड हैव स्टेड वन मोर सीजन। I think maybe he realized ये हो गया अभी और नहीं चलेगा. रियलाइज दैट आई थिंक ही वाज लाइक कि हाँ अभी ठीक है, कुछ है नहीं, मैं क्यों खेलूं। इट वाज दैट पॉइंट कि ही वाज नॉट गोइंग टू बी स्टार्टिंग, तो मैं पूरा मेहनत इतना, एंड देन व्हेन यू कम ऑन यू हैव टू मेंटेन दैट लेवल, राइट? Yeah, एंड देन व्हाई, लाइक आई थिंक ही थॉट ऑन द लाइंस ऑफ व्हाई टू स्टॉप अ यंगस्टर्स ग्रोथ। कामाविंगा भी था. Yeah. अभी मैंने जितने भी लास्ट 2 सीजन में मैचेस देखे मैंने, आई थिंक 2 या 3 बार कामाविंगा को एक्चुअल में उसकी पोजीशन पे खेलते हुए देखा है मैड्रिड में, स्टेडियम पे। I know, ठीक आगे. है, बट कामाविंगा क्या प्लेयर है यार वो। Kamavinga, even that guy, the one, I don't know, he's famous for wrong reason. He was the one who missed that chance against Argentina in final to Tuchamini, I think. वही था, कौन था? Who was that guy? टूचामेनी ने ऐसा कुछ मिस नहीं किया था। फाइनल में नहीं मिस किया था जो मार्टिनेज ने सेव वो किया था. पीएसजी में Oh, who is that guy who missed? वो फ्रांस के खुर्रम लिए. ऐसा कुछ नाम है उसका। तुरम, अच्छा. वो तो मत ही मिस यार दिलाए यार, साला क्या मतलब, थोड़ा That would इधर have, उधर। हाँ, बट थोड़ा सा. लाइक वो मैच है वेयर एम्बापे शुड, आई थिंक दैट इज आल्सो प्रोबेबली द फ्रांस मेंटालिटी का कुछ हाँ. प्रॉब्लम है कि ये लोग कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते, बिकॉज पॉगबा हैड द सेम प्रॉब्लम। ठीक है, तो पॉगबा हम्म. को वर्ल्ड कप में देखा था, पॉगबा वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द या, वर्ल्ड या, एंड या. फॉर श्योर द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम, एंड हम्म. सेम पॉगबा यूनाइटेड में कचरा था। अरे भाई. एंड अगेन पॉगबा इज अ हाईली गिफ्टेड मिडफील्डर, उसके पास बॉडी है, कटिंग है, पासिंग रेंज है, सब कुछ है, बट मेंटालिटी नहीं है। And देखते हैं। आई थिंक लिवरपूल is not helping themselves by missing so many chances against City, and they're only 1-0 up. इतना अच्छा हाफ खेलने के बाद they should have been more, they should have scored more for sure. या, या, इजीली. Yeah, they should have been 4-0 up, यार, at least. I हो think भी what ज्यादा हुआ, मतलब they should have been two to minimum 2 or 3 दो तो is, होना चाहिए था. हम्म, दो तो आराम से बनते थे उन लोग के। एंड बिकॉज तू देख तो सिटी को भी एक दो चांसेस मिल चुके हैं वेयर दे कुड हैव टर्न्ड इट अराउंड एंड शुड हैव लाइक कुड हैव स्कोर्ड ऑन अनदर डे। आई थिंक सिटी के साथ ये नुकसान हुआ है कि गुंडोगन is not able to create the impact which he did the True, last yeah. time around. ठीक है, Yeah. Kovacic was never the player who could have impacted City's midfield. हाँ, मतलब मेरे को उसका कुछ खास ऐसा वो दिखा नहीं. हम्म। I think he was just there to give cover to Rodri. या रॉड्री का, आई थिंक कवर टू रॉड्री वो लोग लास्ट सीजन इसको लेके आए थे ना, केविन फिलिप्स फ्रॉम लीड्स, हम्म. इंग्लैंड का सीडीएम, इवन ही डिडंट वर्क आउट। इंग्लैंड का, अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ. फिलिप्स फिलिप्स भाई, वो लीड्स तो वाला, क्या था. आई थिंक लास्ट सम ऑफ सीजन दी, उसके 2 सीजन पहले। हाँ, some of the signings that have happened, like if you remember this Leicester player Danny Drinkwater. अभी चेल्सी ने किया कंस्ट्रक्शन था ना में, वो तो, हाँ. 40 चेल्सी. मिलियन में। यू नो, हाँ. मतलब वो यूनाइटेड यंगस्टर है।
Yeah, he's now यूनाइटेड प्रोडक्ट है वो। he's now working in the construction वो field. दो प्लेयर्स ऐसे थे, आई थिंक वही सीजन में चेल्सी ने दो ऐसे बिना दिमाग वाले के थे, वन वाज ड्रिंक वाटर एंड देयर वाज वन मोर। अरे दिस गाय बाकायोको। पका। फिर भाई एक साहब। बार ये इनने किए थे लिवरपूल ने, एंडी कैरल और चार्ल्स एडम्स। अरे चार्ली एडम्स भाई साहब। मतलब उसका महंगे चार्ली महंगे। एडम्स, हाँ चार्ली एडम्स का तो उसने मतलब बता दिया वो। सैफ ने बोला था ना, हिज हिज सेट पीसेस आर वर्थ मिलियंस ऑफ ये वो। हम्म। भाई साहब, सम लिवरपूल भाई द द लिवरपूल फेलियर। ने वो जो दौरान में साइनिंग्स किए ना, वो भाई साहब। मिजरेबल। ठीक है। वो टाइम पे अगर मेरे को दो साइनिंग्स उनके याद आते हैं व्हिच एक्चुअली वर्कड एंड वर गुड, वर सुआरेस हम्म। एंड कोटिनो। या आई थिंक यस यस यस। सुआरेस का तो वो सीजन वाज भाई साहब वन ऑफ द बेस्ट इंडिविजुअल सीजन हम्म। I've seen. Oof. And he was very good. He was actually I think. सुआरेस अगर वो हरकतें नहीं करता जो उसने की है, हाँ ठीक हाँ। है, he would have had lot more respect than what he has at this moment. Right right. I agree. I Even in agree. Premier League, he would have and he would have received more love. हाँ ठीक हाँ। है। No doubt. No doubt. वो सिर्फ हेटरेड लेके गया, बट देन इवेंचुअली आई थिंक वो सारा प्यार उसको कंबाइन करके मेसी ने दिया है। Sort of. He was player तो बहुत अच्छा था यार वो। हम्म। मतलब टू बी पैशन वेरी कमिटमेंट है। ऑनेस्ट, ही वाज और इज बेटर देन इग्वेरो। ही वाज Oh, बेटर देन good इग्वेरो। good good comparison. Better than Aguero. हाँ बोल सकते हैं। Yeah, you can say that. Yep. ही कुड इम्पैक्ट मोर देन More इग्वेरो than, डिड। yeah, yeah. I agree. I agree. हम्म। वो विंग पे भी खेल लेता था, मिड में भी खेल लेता था, स्ट्राइकर तो भाई साहब। आई थिंक हम्म। सम ऑफ हिज गोल्स आर जस्ट सो, मतलब एक न्यूकासल का गोल आई कांट, इवन इफ आई वांट टू आई कांट फॉरगेट। वो एक लुइस एनरिके करके, देयर वाज अ फुल बैक, हम्म। ये वो बॉल ऊपर से फर्स्ट टच उसने कंधे पे लिया, सेकंड टच से राउंड ऑफ किया, थर्ड टच पे गोल। वो ड्रॉप शोल्डर वॉली मारना डिफिकल्ट हम्म। होता है, आई थिंक दैट इज मोर डिफिकल्ट व्हाट ही डिड भाई साहब। ओहो। मुझे तो पता है, जब भी ऐसे न्यू कैसल का नाम आता है ना, एक मैच पता नहीं कैसे वो फिट हुआ है। अगेन मेरे को बोलेंगे सब कि आर्सेनल का रेफरेंस वो दे रहा हूँ फोर तेरे नील फोर ऑल को, वाला। ओवरऑल वाला। और उसमें उन लोगों का वो प्लेयर कौन था, चीक टियोटे। टकला था, टियोटे। हाँ और उन टियोटे। लोग का वो तब एक स्ट्राइकर भी था भाई, वो फॉर अरे समहाउ हाँ मेरे हाँ को। हाँ। आई नो दैट, अरे दिस गाय जो चेल्सी के अगेंस्ट वो एंड बैंड गोल मार दिए थे उसने हाँ, पापी और वो आई से। थिंक बाद में सिटी ने, चेल्सी या सिटी ने साइन टेम्बाबा भी किया था। टेम्बाबा। डेम्बाबा। हाँ। वो क्या कमबैक हुआ था वो। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट क्रेजी मैचेस आई रिमेम्बर। और वो क्यों मेरे मेमोरी में बहुत ऐसे फिट है। आई थिंक दी तब। द वो जो लास्ट वाला गोल मारा था दैट प्लेयर, आई थिंक ही इज नो मोर, ही पास्ड अवे आई थिंक सो। उसने बॉक्स उसमें आई थिंक इसने टियोटे या किसी ने एकदम एक बॉक्स के बाहर से जो एक वॉली हाँ मारा था। वही वही वही। हम्म। अरे भाई अ, साहब। फिर जैसे सिटी के साथ वाला जो माइकल ओवन वाला मैच था, वो आओ। मैच मैं कभी नहीं भूल सकता। कभी, लाइक उसके बाद वो पर्सी वाला भी सीन हुआ है राइट, जब वो पर्सी ने लास्ट मोमेंट पे फ्री फ्री किक किक से मारी है। गोल मारा था। हाँ हाँ बट हाँ। स्टिल वो जो माइकल ओवन वाला मैच है ना, उसमें तो वो अलग ही एक पूरा हिट दिया था। वो मैच भी कभी ऐसे मेमोरी से मेरे जाता नहीं है। आई थिंक उस मैच के बाद मोर देन सिटी फैंस हिटिंग ओवन, लिवरपूल फैंस हिट ओवन नाउ। हाँ वो उसको डिसोन कर दिया भाई ओवन को उस मैच के बाद तो। हम्म। आई थिंक उन्होंने तभी डिसोन कर दिया था मोमेंट ही जॉइंट यूनाइटेड। या ठीक है मतलब तो चलो। मतलब यार, अब आई थिंक अनफॉर्चुनेटली इट हैज बिकम टू कॉमन फॉर या प्लेयर्स टू मूव अराउंड इन राइवल्स। बाकी जब पहले इटली में अपने फिर भी सुनते थे, जो हाँ। पर्लो और ये लोग करते थे, और इटली में ये सब होता रहता था। ठीक है। राइट या। बट प्रीमियर लीग में वी कुड हैव नेवर इमेजिन, जैसे माइकल जब सिटी चला गया, हाँ। ठीक है, तो वो खत्म था यूनाइटेड के प्लेयर्स के लिए भी, फॉरगेट फैंस, ही हम्म। वाज ओवर फॉर द फैंस। वो गैरी नेवल का एक इंटरव्यू भी था, वो लोग एक बार स्टैंड वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आते हुए भी खड़े, नेविल वो देख देख कर रहा है माइकल उसको, नेविल को कुछ नहीं पड़ी।
कि यू आर हम्म। डेड फॉर अस इन आवर मेमोरी। तुम एक बार सिटी चले गए, ये चले गए, तो यू आर खत्म। या इट यूज टू बी लाइक अ वेरी बिग डील कि अगर ऐसे राइवल्स में तुम जा रहे हो इधर उधर, तो अब तो बहुत ज्यादा हो गया है। जैसे मोरिनो ने भी जो की, लाइक इवन मोरिनो ने जो किया है, राइट, इज द चेल्सी लेजेंड फॉर लाइफ, हम्म। एंड देन ही जॉइन स्पर्स। इवन मैं ओल्ड टाइम वाला मोरिनो भी मैं अगर इमेजिन करूँ तो वो यूनाइटेड ज्वाइन करता, लेकिन वो स्पर्स नहीं फर्स्ट करता। ज्वाइन नहीं करता, या आई एग्री। हम्म। ब्राइटन इज अबव मैनचेस्टर सिटी। आई बेट कोई अपने को बोलता ना 1 करोड़ देता हूँ मैं, ये स्टेटमेंट पास कर और ये होगा, तो भी अपने नहीं मानते, दैट वी वुड हैव सेड आई दिस एट आई सम पॉइंट। एग्री, आई एग्री, आई एग्री 100%। आई मीन मेरे को ये नहीं, मैं मेरे आई थिंक चेल्सी एंड सिटी का पोजीशन आई वुड बी हैप्पी टू स्वैप गिवन हाउ चेल्सी वेयर, बट या आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। या बट अभी ये देख, तो मतलब अभी देख, इट इज 9 पॉइंट्स का गैप, ठीक है। आई नो, आई मीन इट इज more believable that Nottingham is on sixth rather than believing कि Man City fifth पे है। फिफ्थ मतलब पे। भाई साहब। हम्म। ये एरोगेंट तो है, बट मैनेजर आर्ने स्लॉट, यू सी हिम, हिज टैक्टिक्स, जो उसके वर्डिंग्स रहते हैं जिस तरह से, ही इज इनटू हिमसेल्फ, वो है। आई थिंक, मतलब, आई डोंट थिंक सो दिस इज जस्ट अ ब्लिप, दिस इज जस्ट अ फ्लूक एज टू व्हाट इज हैपनिंग विद लिवरपूल एट दिस मोमेंट। दिस इज गोइंग टू बी कंसिस्टेंट इज व्हाट आई फील। होप सो। आई मीन दे हैव, ऐसा बोलना नहीं चाहिए बट आई थिंक लिवरपूल हैव बीन थ्रू अ लॉट एज अ क्लब, दे हैव बीन थ्रू अ लॉट। मतलब भाई एंड आई विश साहब। फॉर मोर, बट ठीक है। बट आई थिंक क्लॉप का वो डिसीजन जाने का वर्कड आउट फॉर देम। उसको समझ आ गया था कि हाँ हो गया। हम्म। आई थिंक वो एक सीजन पहले ही चला जाता, बट आई थिंक दे वांटेड, उनको ये स्लॉट नहीं मिला होगा। एंड उन लोग फर्स्ट चॉइस तो ये था ना, फर्स्ट चॉइस वाज एमोरिम। वाज इट? ओके। Yeah, Liverpool's first choice was He would Emery. have been great there also. Then there was one more guy. Then they went for Xabi Alonso. Hmm. ठीक है. Hmm. But Xabi Alonso, I And think he made to a be smart decision. honest, I think him denying the job has turned out well for them. Well, yeah, yeah. Yep, yep, yep. मेरे को Xabi Alonso के साथ इतना अच्छा खेलता हुआ तो नहीं दिख रहा था लिवरपूल फॉर श्योर। Correct, correct, correct. नहीं, क्योंकि I think he made a very good decision. जैसे लैम्पार्ड के साथ चेल्सी ने किया ना, वो भाई मेरे को तभी पता चल गया था, बिकॉज वो आएगा शुरू शुरू में पैशन पैशन रहेगा कि हाँ एक से फिर वो फिजल आउट हो जाता है। लैम्पार्ड को मिल गया ना जॉब कॉमेंट्री सिटी। कोवेंट्री सिटी, हाँ वही सब मैनेज करेगा अभी तो। लैम्पार्ड इसके साथ अच्छा परफॉर्म किया था, फिर भी डर्बी के साथ, दैट हाँ इज व्हाई ही गॉट द जॉब ऑफ एग्जैक्टली, चेल्सी। या एग्जैक्टली, बट आई थिंक इट वाज वे टू अर्ली, वे टू अर्ली। ये लोग ना, they've not went through, if you see, they've not went through the process of being an assistant manager, which I करेक्ट, feel is very important step, ठीक है, वेरी वेरी। in order to become a good manager and हम्म to learn and go through that process, especially if you have been a very good player with a prolonged career, हम्म। ठीक है, तब वो बहुत, for example, Zidane was an assistant manager to Carlo Ancelotti for या a very long time, और ही वो वाज। सीखा उसमें अंदर, ठीक है। हम्म आर्टेटा has been an assistant manager अंदर पे, हम्म। सीखा ना सीखा इज सेकेंडरी, बट जो भी थोड़ा बहुत फ्लूक से आर्सेनल खेल लिया, ठीक हाँ, है, अमोरिम दैट भी हैज था ना इम्पैक्टेड असिस्टेंट इट। मैनेजर, मोरिनियो के अंडर ही था ना वो तो। कौन? मोरिनियो के अंडर ही था ना अमोरिम। कौन? अमोरिम वाज एमोरिम। अंडर, हाँ मतलब। एमोरिम ने अपने कोचिंग बैचेस किए मोरिनो के अंडर व्हेन ही वाज एट यूनाइटेड, हाँ। तो असिस्टेंट नहीं था वो, उसने बैचेस कंप्लीट किए। एंड फिर तो ये ले, देयर वाज वन मोर प्लेयर आई वाज थिंकिंग ऑफ, अभी मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा, who have been through this process, whereas ये लोग जब थे, they just went into the job thinking that they know everything, for example Gerrard, same thing, भाई Lampard, साहब, या ठीक है, Rooney doing the same thing now, अरे रोनी तो ठीक है। सीरियसली यार, सीरियसली। फिर
गैरी नेवल डिजास्टर हाँ, एज अ वेलेंशिया। मैनेजर। उसका भाई फिल नेवल, उसने फिर भी अपने असिस्टेंट बैचेस और वो सब किए हुए हैं। हम्म। फिर ये लोग दे नॉट बीन थ्रू दैट प्रोसेस विच, एंड फिर तुम्हारा ना, इट्स जस्ट नॉट यू, आई थिंक तुम्हारे साथ जो टीम है ना, वो स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है। जो बैक तुम्हारे कराया, असिस्टेंट बैक एंड कोचेस और स्टाफ है। बैक एंड स्टाफ, दैट इज वेयर दे, एंड अगर तुम वो प्रोसेस से नहीं गए तो हाउ आर यू गोइंग टू आइडेंटिफाई? तो इनिशियली समवन इज गोइंग टू आइडेंटिफाई फॉर यू, ठीक है, अगर तुम घूमे नहीं हो ज्यादातर। एनी subs expected? I think at some point we would see ये क्या स्ट्राइकर का नाम है यार लिवरपूल का? नूनेज, नूनेज। Nunez. I think at some point we might see Nunez coming in हम्म। for City. I don't know यार, what is their bench also. Let me check. अब सिटी ने भी ऑनेस्टली, अब सिटी ने देख उसको भी तो रिप्लेस नहीं किया, जो प्लेयर इन लोग का एथलेटिको मैड्रिड किया, हाँ, अल्वारेज। अर्जेंटीना का एल्वारेज। हाँ, ठीक जूलियन है, अल्वारेज। तो जब तुम्हारा क्या ये प्लेयर है। नहीं चलेगा तो तुम्हारा आई थिंक डोकू, केविन डी ब्रुयन विल कम इन या at some point ग्रिलिश for ऑल्सो। sure, and Savino would come. I'm not sure Jack Grealish को ये गेम में वो डालेगा, because this is not a game for Grealish for sure. अब देख ये वाला मैच, अब देखिए आर लुइस को, जो इन लोग का डिफेंडर है, नहीं है, वो राइट विंग पे खेल रहा है जिसके लिए, पेप के लिए, कौन सा, ये रिको लुइस? रिको लुइस। ओ। ये मेरे एफपीएल में भी है, ओ। और था, मैंने निकाल दिया अब तो, बट और कौन है? एंड आई थिंक न्यूनेस वुड कम फॉर सिटी, कर्टिस जोन्स वुड कम इन फॉर एट सम पॉइंट फॉर ये गान ग्रावन क्रेवेनबर्ग, क्रेवेनबर्ग। या ही हैज एक्चुअली बीन अ गुड साइनिंग यार, ग्रामन। हम्म। एंड इवन अभी ये मैकेलिस्टर इज आल्सो सॉर्ट ऑफ पिकिंग अप। इज गुड। मैकेलिस्टर लास्ट दो चैंपियंस लीग में दो गोल है उसके, और दोनों आई एकदम अच्छे जब गोल है। तक जब तक कि मैकेलिस्टर खेला नहीं था ना अर्जेंटीना के लिए, आई डिडंट नो दैट ही वाज फ्रॉम अर्जेंटीना, आई थॉट ही वाज इंग्लिश। नाम भी हम्म। ऐसा उसका। इन लोग का, आई थिंक इन रिसेंट टाइम्स जो एक प्लेयर जो सबसे ज्यादा शॉकिंग था कि हाउ दिस प्लेयर डिडंट वर्क आउट, इज थियागो एलेंट्रा अरे इन हाँ मिडफील्ड। यार, सच में, सच में। वो तो क्या बिकॉज फ्लॉप द हुआ है। अब तो रिटायर ही हो गया ना आई थिंक वो। ही डिड, ही रिटायर्ड। हाँ, सिटी तो, लिवरपूल छोड़ दिया है मुझे इतना पता है, आई डोंट नो इफ ही हैज रिटायर्ड, ओके। बट वो भी, दैट वाज, बिकॉज ही हाँ। वाज आल्सो अ वंडरफुली गिफ्टेड प्लेयर, हम्म। यप, बट यप, यप। डिडंट वर्क आउट। तूने तब फुटबॉल देखा है जब लिवरपूल के लिए जावी अलोंसो खेलता था? हाँ, हाँ, 2006-7 में। हम्म। या। वो टाइम का मैंने इतना फॉलो नहीं किया था, आई एम नॉट सीन जावी अलोंसो इन लिवरपूल। सो आई हैव, वो जो मैच है ना, उस टाइम पे पेड केबल वाज वेरी कॉस्टली। हम्म। ईएसपीएन पे आता था वो। तो द मैच ऑफ वो मिरेकल ऑफ इस्तांबुल, हम्म। तो वो मैंने पेड मतलब किसी के घर पे जाके देखा था। किसी के क्या, अच्छा। वो मेरे ऊपर एक अंकल रहते थे, उनके घर पे वो केबल आता था ईएसपीएन का, एंड दैट टाइम पे इट वाज बाय चॉइस। टेन हम्म। स्पोर्ट्स या किस पे आता, ईएसपीएन या टेन स्पोर्ट्स, ईएसपीएन पे आई थिंक ईपीएल आता था, टेन और स्पोर्ट्स पे ये आता था। चैंपियंस लीग आता था। बिकॉज आई थिंक टेन स्पोर्ट्स हैव बीन बॉट बाय सोनी। सोनी, सोनी उसके राइट्स हैव बीन बॉट बाय, हाँ। हाँ। तो टेन हम्म। स्पोर्ट्स पे बैठ के वो मैच देखा अभी था। भी आता है टेन स्पोर्ट्स। अभी भी आता है, आई हैव नेवर सीन अगेन टीवी तो। अगर तू देखेगा ना तो टेको टीवी पे दिखेगा, सोनी के साथ ही सोनी 10 ऐसा बन चुका है वो। हाँ, सोनी टेन, यस यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हम्म। सोनी टेन एचडी। तो टेन हम्म। स्पोर्ट्स पे आई यूज टू वॉच वो, उस पे देखा था मैंने। बिकॉज हाउ आई रिमेम्बर दिस इज बिकॉज उसके 2006 में हुआ था, 2007 में जो ये
नियो क्रिकेट पे किस पे आता था, जिसपे अरे अपना वर्ल्ड कप नियो पे जीती थी इंडिया। क्रिकेट इंडिया वर्ल्ड कप क्रिकेट जीती मैचेस थी, ना। हाँ T20 वर्ल्ड कप जो जीती थी, तो वो भी उन्हीं के यहाँ देखा था मैंने। हम्म। मतलब देख, टीम तो अभी भी ऐसा है कि सिटी का तुम कमी निकाल नहीं सकते हो एक्सेप्ट फॉर अ सीडीएम पोजीशन। हर एक प्लेयर पे, हर एक पोजीशन पे एक है वर्ल्ड प्लेयर क्लास यार। प्लेयर है। हम्म। डिब्रॉयन इज फुल्ली नॉट फिट, इसलिए वो स्टार्ट नहीं कर रहा है कि और कुछ है। मे बी, आई थिंक सो, आई थिंक सो, आई थिंक ही इज स्टिल नर्सिंग एन इंजरी, और मे बी आई थिंक उसको ऐसा होगा, इंजरी ऐसी होगी कि वो ईज अप कर रहा हो देने में। हम्म। मतलब नहीं तो सेंस नहीं बनता जब तुम इतना स्ट्रगल कर रहे हो, तुम अपने बेस्ट प्लेयर को उतार ही नहीं रहे हो। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। हम्म। नहीं, आई थिंक ये जो गोल्स कन्वर्ट नहीं किए ना लिवरपूल ने, इट माइट प्रूव देम कॉस्टली यार। हम्म। क्योंकि अभी क्या, जैसा चल रहा है, पेप अभी माइट बहुत बी। बैलेंस में गेम चल रहा है अभी। वो हाँ जो अब। एक अटैक आया था पूरा लिवरपूल का, वो भी खत्म हो चुका है। करेक्ट, करेक्ट, एंड मे बी पेप माइट बी ऑल्सो भी थिंकिंग कि भाई अगर यहाँ से पॉइंट भी मिल गया तो इट्स गुड इनफ। आई एम प्रीटी श्योर पेप इज थिंकिंग ऑफ अ पॉइंट ओनली। आई डोंट थिंक सो पेप इज लाइक कि चलो जीतते हैं। पेप वुड वांट कि मैं बॉल रख दूं अपने पास। हाँ, और चांस एंड एक बना के गोल मारो बस। हाँ, the main priority would be to keep the ball as much as possible. करेक्ट, विच दे, आई डोंट थिंक दे हैव बीन एबल टू डू दिस वेल, अभी तो रख भी आई रहे। थिंक इस सीजन जो उन लोगों के साथ चेंज हुआ है ना, लास्ट सीजन तक ये था कि सिटी अपने विल पे गोल मारता था। हाँ, कि सिटी ने अब डिसाइड किया मेरे को गोल मारना है, तो गोल अगले दो मारेगा। मिनट में सिटी गोल मार देगा। करेक्ट, करेक्ट। विच इज नॉट हैपनिंग दिस सीजन। आई थिंक दे हैव somehow, मे बी, आई डोंट नो, टैक्टिकली ब्रेक डाउन कर लिया है या क्या किया है पता नहीं। बिकॉज आई डोंट सी अ लॉट ऑफ सिटी प्लेयर्स मूविंग फ्री। जैसे पहले ना फ्री घूमता रहता था ये, जैसे बर्नार्डो सिल्वा है, फोडेन है, ये लोग कहीं ना कहीं पॉपअप होते रहते थे। अभी उतना हम्म। ज्यादा पॉप नहीं हो रहे हैं। पॉपअप, अरे गुंडा होगा नहीं, मेरे को पता है यूनाइटेड के हर मैच में कहीं ना कहीं से हाँ, पॉपअप हो जाता था। कहीं से यहाँ ऐसा पैदा हो जाता उधर कि ये हम्म। कहाँ से आया। Rumors are Salah wants to coach Liverpool one day. वाह। आई डोंट थिंक सो, सलाह में मुझे वो कोच वाले काइंड ऑफ डाउट एबिलिटीज करते दिखते हैं। हैं। हाँ मैं सीरियसली। मतलब ये वो कैप्टन वाले क्वालिटी नहीं दे पा रहा है। इफ नॉट द कैप्टन तो कोच इज बिट फार फेच्ड एट दिस मोमेंट। मैं मतलब आई आई ऑनेस्टली बिलीव इफ नॉट फॉर हिज स्कैंडल्स, इफ नॉट फॉर इन सब में जो एक्स प्लेयर्स है ना, उनमें अगर बेस्ट कोच कोई निकलता है वुड हैव बीन रायन गिग्स। ओके, या मे बी, आई डोंट नो मतलब। वो सही ट्रैक पे भी था इन टर्म्स ऑफ कोचिंग, हम्म। but then his own doing of all of it. Because a oh, for all the balls City had, Liverpool needed two passes to break them out. अरे यार कैसा मिस किया यार ये। हाँ सच में 2 पास में खत्म कर दिया था। केलेहर टू रॉबर्टसन, रॉबर्टसन से गैक्पो, खत्म। Hmm. अरे यार, आई थिंक बहुत वो डिफिकल्ट होता है वो। अरे करंट प्लेयर्स में अगर आज के जमाने में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, तेरे को कौन लगता है वो कैन बी अ गुड मैनेजर? अभी के जमाने में, वाओ, आई डोंट नो, अभी के जमाने में तो नहीं, बट आई 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 थिंक मे बी दिस गाय, आई डोंट नो खेल रहा है कि नहीं वो। ही इज नॉट करंट बट ही जस्ट, हेंडरसन, जॉर्डन हेंडरसन। ओए ऐसे यार, जॉर्डन हम्म। हेंडरसन कैन बी अ गुड मैनेजर। आई वुड लाइक टू बिलीव यू, बट वो इंग्लिश है एंड दैट इज वेयर आई हैव माई डाउट। मेरा भी डाउट वही है कि वो इंग्लिश है। हम्म। अनदर गाय इज, Wait, do you see some dust on the screen? एकदम से कचरा आ गया हो नहीं रेड तो, कलर का, नहीं डीजे। तो, नहीं।
अच्छा। नहीं दिख अरे यार, मैं सीरियसली टीवी में देख रहा था। अरे शिट यार, व्हाट इज it? पांच मैं तो नहीं सहता यार, आई वुड नॉट हैव हर्ड टेकन दिस यार, व्हाट इज दिस? आई वाज It's सीरियसली okay, it's okay. I was seriously looking at my TV. Now City will score. Just watch. रहा। Why do you Are you say? supporting City? Of course, अच्छा, till you they want score. 2-2 ना? You want 2-2, right? You want I 2-2. I don't even care 1-1. Three हाँ। three 4-4 5-5 6-6 भी कुछ भी लेकिन ड्रॉ होना चाहिए. 3-3-4-4-5-5. Wow. बड़े गेम्स में हालैंड इज जस्ट सो डेड। I mean, he has scored versus. Oh, you're right. He has scored versus United, so doesn't really count. I So. knew that was coming. I saw that coming. When I said that, I saw that coming. Hmm. But other So, part, this was a question I asked just to DJ also. Say my last uh, few. DJ is also still thinking. uh, In this current crop of players which we see playing, thinking, who right. do you think Hmm. can be a good manager? Um, I think a good manager. I would say. mm, let's think. Who would be? I think Gundogan would be a good manager because looking at this match itself. Uh, Hmm. I think I think Ronaldo could be a good coach. I don't think if he'll be a good manager or not. I think he could be a good coach. I also have Ronaldo in my mind, but I also think कि वो एक मोमेंट के बाद बोलेगा जब वो देखेगा अपने प्लेयर को कि तो उतर मैं आ रहा हूँ पिच पे. हाँ, that हाँ. That's Hmm. there too. But I think that Hmm. would be the driving factor. But I उसका वो do क्या बोलते हैं? feel that ओ डिफरेंशिएटर में मतलब जो बोल oh, सकते हैं. I do feel both of them once they retire, Messi and Ronaldo, they would Hmm. want to be as far as possible from football for at least till a certain time. I think Messi is a great player, but I don't think he's मेसी a की तो manager. nowhere a Manager, coach, मतलब वो हाँ, तो manager पॉसिबल ही material तो नहीं नहीं. Yeah, yeah, yeah. है. I think who else? Let's see. I think if we look at, I think Odegaard would be a good coach from my team. I think he could Okay. be a good coach. Xhaka is already doing his batches, if I'm not wrong, but I think Xhaka would be a good coach as well. Like Yeah, I think Zaka I these, agree. Zaka I yeah, agree. Odegaard I'm not sure. I think a lot of times, like Rude is a very, I think might be a different sort of example, but mostly we see midfielders having that footballing Hmm. brain to get into What a run by management. Silva. Yep, Eh, amazing. eh, eh. Oh, beautiful run, but Yeah. So Silva could be, I think Silva has potential as well he's to a be calm head too. exactly. So you see, Hmm. like, and Arteta doesn't have any success to actually say Arteta, but Arteta, Alonso, Pep, all these people, Zidane, all are midfielders. Like all play Hmm. from, like Midfield is the Ru engine of any team. Midfielders are the most yeah, smart thing. They don't yeah, get enough credit. I mean, yeah. the reason also United is not able to make a comeback is they're not able to create a strong midfield. Right? Oh shit! Oh, what a miss! Oh, Salah, Salah, you're my LPL captain, oh. Salah. He's my captain too, but I don't care. He- Salah. क्या मिस था. When हाँ, Liverpool जैक्सन नहीं है. lost to जैक्सन each इससे अच्छा other, है. नहीं नहीं, when they जैक्सन got जैक्सन. बेटर. Champions League ended. When Liverpool lost Jackson to would each have other. also missed this. I don't think so. There is Did one you? player I'm pretty sure would have missed this, Who? where I can bet my money also. Who would have The missed legend it? Marcus Rashford. क्या मिस किया यार ये, हट. अरे बाप रे, uh, it almost happened for the second time. Like not the miss, but taking away the ball. I think playing highlight against Salah or Liverpool just is
doesn't make any sense. Dreadful. It makes no sense. It's zero. Yeah. DJ and I were just discussing that. Hey, yeah. Why is Doku coming on? Okay, City will not. City will not not get a draw. ये क्या हो गया ये Like, बाल क्या है ये? I think he gets. no, मतलब I think he's a good player. उसको ज्यादा ही hate मिलता है डोको को. no, no. I don't think he's. I think the criticism is because he plays for City. वो City level नहीं है. That's what I feel. I don't think he's हम्म City level. I हम्म वो Saint Maximus था ना. हम्म Uh, यार नहीं यार he's उसका तो बेटर है. Come on. ये मेरे को नहीं Saint अच्छा लगता Maximus था was सेंट good. हाँ मैक्सिमम यार। मुझे भी हाँ। पसंद था वही बोल रहा हूँ मैं क्या बट उसका ये बेटर. आई थिंक ये इंसान को भी तो फुल हेट मिल रहा है ना अभी. लाइक ही इज आल्सो नॉट एबल टू डू एनीथिंग सेविनो. वो हाँ दैट इज आई थिंक दैट इज प्री मेच्योर उसको एक सीजन भी नहीं हुआ है बेचारे को लाइक Doku's been there for a season or so, right? But if you cannot come and straight away perform in this city team, which Hmm. team then you can just go straight away and perform? Like that's the best atmosphere you can get. I think नहीं I feel you can best perform away from City as an individual. In from a team perspective, yes. वो पता है except for इसको मेसी को छोड़ के which other player was Pep able to like let loose and हाँ तू अपने हिसाब से खेल like there was no other player. Hmm. Yeah. Yeah, yeah. Hmm. And I'm still thinking इस क्रॉप में से कौन मैनेजर होगा? अर्ली अर्ली भाई वेंडरसन है। I'm not able to मतलब। हाँ मतलब कोई एक भी नाम ना ऐसा पॉप आउट नहीं होता हाँ कि नहीं हो नहीं रहा। दिस कैन फॉर श्योर बी लाइक अभी तक मेरे माइंड में जो बेस्ट कंटेंडर है वो एक्चुअली व्हाट पार्थ सेड वाज जाका. जो एक अच्छा मुझे Yeah. हाँ याद आ रहा है जिसको मैंने देखा भी है बहुत और कि हाँ ही कैन बी अ गुड मैनेजर. If you're thinking from Chelsea, We are There's no one. thinking overall. We are not just नहीं bound मतलब to club. for There's no Kadichi, I'm one. thinking. There's no one. I think Sancho. Although I don't like the player, I think Enzo could have that head on him Nah. once he matures. Doesn't have the right head. नहीं once he matures मतलब अभी तो बहुत young है यार. Uh, And like the only unfortunate party he plays for I, Argentina. I, 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 So I, I hope Cruz becomes a good manager, but I don't see him becoming one. I hope. I think Casemiro can be a good manager I was though. going to say Casemiro, yeah. Uh, I I think Cruz का I don't Cruz, is he Modric, going both into I feel. More is he more of going to Cruz than Modric. uh, is Cruz going to go into management? Is I that don't what think his so. plan? I doubt it. I don't think so either. Yeah. Well, And if he has क्या Modric, टीम retired चला so रहे हैं ये लोग यार, early, अल्लाह का फरक। if they've retired so early, he just might miss football at certain time and think, okay, चलो अब ये करके देखते हैं. I think Cruz ka decision was like perfect in the sense like he retired on a high, right? Hmm. Champions League jeet ke he retired. Hmm. So wait, he played the Euros, right? Yeah, he played the Euros. Yeah. Hmm. So not so high. हम्म, Weirdly, I mean, of course, Dadichi might disagree, and I don't know about you, Akash, but I think Havertz could be a good coach. what? Hmm. No, if you think about अरे if I think that I hope he becomes. He has won us the Champions League, so चले भाई। We have a comment. Will Messi be a manager? We have already no. I discussed. doubt it. No, I no, doubt it. I doubt it. no, no. If even if he becomes one, I don't think so. He'll be a good one. Yeah, wait, हाँ, that's the thing. I think that would it should not tarnish his legacy, but that yeah, will, how people are. The people will start Mm. comparing. Oh, Yeah, they'll yeah. they'll forget That the is Ballon that is d'Or. why I say that they both of them should just stay very far away from football because they'll be constantly judged on that only as to the greatness. And if they fail over there, it just why to go through that? You have had such a beautiful career and such a successful career. Yeah. I mean, look, Abhi, Ronaldo's already competing with us. He's a YouTuber. So मतलब कंपटीशन देख रहे हैं रोनाल्डो वो क्या the Hmm. only difference is he has like a lot of He has expensive all the equipment. pulls, so that is why he's able to get all the subscribers. I saw there is this video with him and Mr. Beast जो कल Before, not the or like कल upload किया था
and it already The had soccer one, like no, the हाँ challenge one, 1 million thing. yeah 12 or 15 hours में uh, Hmm. 1 crore views, 10 Yeah, but million views. he lost the challenge. Oh, Ronaldo. Oh shit, So there was a I didn't watch. challenge with a fan where they Uh-huh. had three, वो जो जिसपे अपने पता darts मारते हैं, Oh that wow. Mm. there are three hanging over the bar at the goalpost, and you Uh-huh. were supposed to hit तीन में से how many you hit, and Ronaldo hit zero with all his अच्छा. shots going to the crossbar only, heading him, and that the fan hit it on the first time itself. Oh, अरे that's pure luck, honestly speaking. Pure luck, but मतलब Yeah. Ronaldo missing should not be depending on the luck, na. But So when I was in Pune, there was this guy. What was his name? Umar. He was hmm, from Saudi, and so I was the midfielder. I was sort of actually playing the defensive midfielder role for a lot of the time I played in Pune. And this hmm, guy was sort of the winger slash striker. So he wanted to play Ronaldo sort of role for the team. So he was being taunted as the best player in the school at that school where I studied, and I was sort of like the upcoming player and stuff. The one thing was his passing was one day you are an rubbish. Arsenal supporter. Over there also you were upcoming, yeah. No, then I was I think I was probably the best ball The best. winner, which is doesn't Yeah. really sound like me, but I know you were gonna say this because we have discussed this. That is why I could comment earlier. yeah. So Hmm, we had the crossbar challenge. And Umar tried like 10 times. I wasn't even a part of the people who were going to try. And I was hmm, like, sure, I'll try. Coach is like, Pat, why don't you get it? And first shot only I hit it. And I was like, oh, I didn't hmm, I didn't even aim for it. वो बस hmm. मारा और लग गया था. So I was like, it's all luck. Like, yes, I you can get better at it, of course. But yeah, it's not that I thought I had like, a player playing with me. I had to shout him इतना सारा आधा मेरा आवाज उधर चला गया. Which he tried also to score a lot of times against me. In his head, he was the next Messi and all of it. Ronaldo Messi का combine करके that player had become. So, In his head, he was that player, हाँ, but could never score mm, against me. नहीं नहीं किया that's है किया why है ऐसा that See fans are not wrong. uh, अरे uh, Present Radhiji, if that's why we when Akash makes Messi. Hmm. client calls, हम्म, the client says, "अरे 50% वॉल्यूम बढ़ाओ अपना." आधा हो जा रहा है. so that's why I didn't go to the Rodi's audition ना I had Akash shouting at me तो मैं बोला रोडी तो मैं अरे यार, you don't watch latent ना Parth? India's कौन got सा? latent. नहीं नहीं नहीं. It's the funniest thing on internet right now. It's just too funny. उसमें Uh, अभी ये there was one episode जिसमें ये आया था रघुराम रघु रघु. रघु, So yeah, the roadies guy. Yeah, yeah. yeah, that was also hilarious. अरे when I heard about the show, I was like, oh, singing, dancing, ये सब होगा. So I YouTube पे जाके click किया, I was like, oh, this is not what I was thinking. But वो उसमें है singing dancing, but it goes with the name. Right. So I mean, the most popular videos had nothing to do with all that. Yeah. So it's like, okay, Liverpool is on the attack. Oh, block. I can't believe, like, in my heart, I want Salah to score. लेकिन यार Offside. कैसे चलो. यार मतलब Offside था. चलो good. नहीं off but they should have scored it would have been 7-0 or something by now right If they concede like a late equalizer in this हाँ match, मारेगा they would वहां have से no one but themselves to blame. अग्रीड वो मारेगा वो अग्रीड And City, अपने right. को points cost होंगे वो अलग. सिटी हाँ सिटी के सामने ऐसे ही होता है. I mean, people were criticizing us. We were down to 10 men. नहीं, Late नहीं but they but will still, that's score. the नहीं best नहीं match I'll tell you Arsenal why played this season. नहीं नहीं I think Arsenal didn't create this many chances Oh, we because they did were not. down We to did 10 not. men नहीं नहीं because they were down to 10 men but
Liverpool have created, if not, I think at least five clear chances, which they have Hmm. missed. Mm-hmm. They've scored only one. एंड भाई Hmm. तीन तो मार लेते यार कम से कम, वो साला वाला तो क्या था बट, साला का दो, वैन का। हाँ। I think the reason I have so much faith in Arsenal still is because we are ready to play City at home, and we should have won versus Liverpool. I mean, I don't know why how we threw that away, but Even even Chelsea should have won that game against Liverpool. If you remember, we were streaming yeah, together. yeah, 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 yeah. If Chelsea should not have won won, that game. they should have at least gotten a point. Drew. Yeah, yeah, yeah. Yeah, but yeah. I mean, उसमें तो वो कोविल ने, like I still remember वो the तो भाई, dumb crap. he did that today also। He's the most overrated English उसमें defender पता ये भी नहीं। in. था ना, दे ये जैक्सन इन लोग ने अपने चांसेस भी फुल मिस किए थे, फॉरगेट व्हाट डिफेंडर्स एंड ऑल ऑफ देम, Yeah, लाइक yeah, yeah. दे वर No, मिसिंग but देयर. the goals, right? Look, Because honestly, this was like what we are talking about Liverpool at this moment. It was City what initially in the start of the match they were doing the same to Liverpool. They started just too good and had flow of chances which they never scored of, and eventually for Liverpool scored. yeah. And Liverpool, what has happened is that with those points versus Arsenal, 1 point obviously, but a point versus Arsenal and oh, Zabardast na Doku. Hmm. That turn was amazing. Oy, Uh, the point versus Arsenal, 3 points versus Chelsea. They just gave them like more and more confidence to play like this now. Because even versus Arsenal, if you see before Gabriel went off, like not sent off, but was substituted, they did not have clear-cut chances to actually win versus us, honestly hmm. speaking. It's Hmm. just that because we are scrutinized so much these ये days, क्या मार रहा है people हाथ में यार, सॉरी। people think कि Arsenal तो जीत नहीं पा रहा. It was literally Liverpool saving the match for themselves. Hmm. पर चलो ठीक है. ये गैक्पो को चुपचाप रॉबर्टसन को खेल देना हाँ, चाहिए। आई नो, व्हाट वाज ही डूइंग यार, फैंटम बन रहा है। वो राशफोर्ड का मैच देखा है उसने उससे पहले। मेरे को लग रहा है, हाँ, आई नो, आई नो। This is like a perfect match for Rico Lewis to score. It's like वो था वो irritating player जो हम्म। कहीं ना कहीं से scrappy goal ला देता है हम्म। तुम्हारे लिए. अरे I यार, feel like टेल मी अबाउट इट। उसका वो दैट वर्ड शुड बी चेंज्ड एंड द मीनिंग, वर्ड का मीनिंग शुड बी, सॉरी द वर्ड शुड बी स्कॉट मैकटोमिनी if the definition is score. an irritating player comes and score. But with Scott at least उसके strikes were like proper. हम्म। और header भी अच्छा, मतलब I think he was really good in the air. If you use him to, if Napoli got him, they most probably saw something in him. Not that they are the best team, but still, कुछ तो देखा होगा. I don't like, मैंने बहुत देखा है रे उस आदमी को, and I had high hopes from him because of all the this guy Mourinho got him in the team, and Mourinho used to like really rate him very high. And one of the other players that United fans don't really or didn't really like is loved by so many teams, Lukaku. I think Lukaku has just proven to the world कि वो टीम के लिए नहीं बना है, at least in Premier League, right? Twice he has Yeah. tried with Chelsea, didn't work out, and to be honest, with us he was not that bad also. Yeah, he scored many goals for you guys. I think with us he's just ये था, but with us there, it was definitely one case that his first touch was just too bad. Too bad. And we would Yeah. keep seeing his videos कि वो एक बॉल पे पैर रख के दूसरे बॉल से जंप करते करते ऐसे फर्स्ट टच के प्रैक्टिस कर रहा है। मतलब ये प्रैक्टिस कभी गेम में क्यों नहीं दिख रही, इतनी प्रैक्टिस कर रहा है तो? Because his first touch just kept getting worse to worse. डीजे तू कल निकल रहा है, परसों निकल रहा है, राइट तू? थर्ड नाइट। हम्म। ट्यूसडे नाइट। हम्म। हम्म।
मुझे फोर्थ फोर्थ या फिफ्थ. Fourth evening you're leaving. नो नो आई नो दैट आई वाज ट्राइंग टू सी. So fourth afternoon we have that match thing, right? जो आप बोल रहे थे. Still getting decided यार, क्योंकि जैसे तू एकदम मॉर्निंग में आ रहा है, एक दो और आ रहे हैं, and then there is so much happening, तो we are like, do we want to tire everyone out? So we'll decide it on that day only. We don't Correct. want. Hmm. Uh, oh, Gakpo is off. सो 3:30 फोर्थ नाइट मतलब फिफ्थ मॉर्निंग 3:30 आई हैव अ मीटिंग. Okay. तो तो मतलब फिफ्थ मतलब टेक्निकली ना. so exactly after our United Arsenal match. यूनाइटेड आर्सेनल मैच. हम्म. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Although I'm taking that day off, वो मीटिंग है तो अटेंड करेंगे. नहीं, now that they don't come also in many, they come in few and six, so you have to take off. Exactly. Last 17, 18 minutes of normal time left. एक चांस तो सिटी बनाएगा यार. सिटी मतलब सिटी 1-0 हारे वैसा तो it would be very shocking to me at least. Hmm. That 3-3 draw was pathetic defending. So by then. Uh, oh, मेरे को तो ये अच्छा लगता है, पता है, सब इसको बहुत गालियां देते हैं. आई लाइक हिम बट न्यूनियस. I think his positional sense and chance creating sense is very underrated. No, Nunez is good. I think he just needs a good team. I don't know why he's at Liverpool. वैसा वहाँ मतलब यार कहाँ जाएगा अभी ये सब. Sorry, what was it? Nunez? I missed the comment. Can City save this match? No, no, no. I would like to think no. I don't know what is pressing shift D down arrow or This right was down. when we were I think this was when we were discussing the crossbar challenge. This is what you do in FIFA if you're playing on your laptop Ah, to hit the bar. okay. Oh, ooh, penalty. Oh, Darichi, you're good. Liverpool will win. अरे मार देता यार. नहीं सही किया. Okay, so they're going to check. Okay. क्या यार दोस्त है क्या उसका? How is he ruined? He is talking to this referee. ये कुछ I think that was a little bit too much, हाँ. वो जो जंप मारा ना डियाज ने. He left his leg. Yeah. ये penalty. This will stick, but uh, Because he didn't get any part of the ball. I think that's the sole reason why. Uh, I know. But uh, if you see but Diaz अगर left his अगर इसको if they overturn, oh they will not. Oh given. they will not. वही मैं बोल रहा हूँ Uh, कि he left his overtime तो नहीं leg हो रहा. leg behind, and I'm not smart. going to complain. Like I've seen, yeah. I've Uh, seen my players get that too. So, but still, I क्या ही कर सकते हैं.
क्या 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 क्या? Sorry. I've seen Arsenal players get that where you leave your leg behind so that it gets touched. They're like, ठीक है अभी मिलता ही है तो क्या कह सकते हैं. Now the only thing that can happen is Ortega saves it. Oh, come on यार साला, come on. ओ साला तो मेरे Ye- नेक्स्ट वीक से है तो चलेगा, मार ना मार. नहीं नहीं भाई, मार मार, मेरा कैप्टन है. मार मार साला मार. चलो मारो वॉकर. and then City hit two goals. Come on. वॉकर इतना ड्रामेटिक है. करेक्ट. Yeah. Oh, अच्छा नहीं. Good. एफपीएल में तो भला होगा. एंड आई थिंक. चलो. See, Arsenal is, I mean, Akash is celebrating Liverpool win. Good You know penalty, that good it is penalty. so strange. Two times we have streamed Liverpool के matches, and both the times I've celebrated in a way because first time I think it was against Chelsea, and as soon as they won, I got 3 points in our own league, and today Salah is scoring, assisting, and I'm getting his points as captain. So that is strange. Though I would still not mind him to lose 3-2. Bale, I would get points on 2-0. City not scoring today would be insane because Not surprising though. Not no, surprising. I mean, it's the record thing, right? Like historically, and that does statistics matter, right? So when you see, like, they haven't had many games where they go 2 games without scoring a goal. They lost 4-0 versus Tottenham, 2-0 यहाँ पे already. Hmm. So Have you guys seen enough of Dominic Solanke in Tottenham to make a judgment? I have not. That is why I'm asking. I don't watch games honestly speaking. But whatever I watched, I think the potential is there, honestly speaking. I think he Well, I think can he was hired for some 70 odd million, right? He was signed for. So that makes me think. 62 or 65 something, yeah. No, Hmm. but no, he's really good. I feel that I think he's a very smart signing, although expensive, but that's because he's English, man. Oh, Hmm. De Both Bruyne are. is And on. Premier League experience. Grealish is on. Uh, and last season he was what, second or third top scorer. So in the league, and that too with Hmm. Bournemouth. And I shouldn't even laugh at them. We lost to them. So, but uh, um, yeah. So I think he can be a striker that can give you like 20 goals in the league Oh, every bad. season. तो आज अगर लास्ट मैच में पेप ने ये सब किया था, तो आज तो क्या अपना सर फोड़ के आएगा पेप? It's okay. I don't want to say anything. Okay, चलो, how many matches more City has to lose for City to consider to sack them, to sack Nah, I Pep? don't think so. No, I don't think so. I think he'll leave on his own if it comes to even If close to let's that say talk. Liverpool City loses their next 10 matches, Yeah, but see, that's the thing. That's not even happening hypothetically. That's the problem. okay, But six let's matches see. before, if I would have told you that City is going to lose their next 6 matches, you would have not agreed to that. Babal कर लो, Babal. That's why Hmm. like I don't like Bernardo Silva. Who is a sore loser? I think you need sometimes sore losers in your team. They would, and they should not be like Bruno, sore loser, जो कुछ कर भी नहीं रहे हैं और सिर्फ वो कर रहे हैं. More than City's talk, what do you guys think? Liverpool champions this year or too early? I think I've Uh, always said that, so I would stick to it. I think, You yeah. said it because you don't like Arsenal. But No, no. I could have just said City if I wanted to from start of the season. नहीं, But सिटी तो नहीं होना था बाद में वो 5 का तो मतलब हद ही हो जाती. ऑलरेडी 4 में हद हो गई थी. बट 5 टाइटल्स इन अ रो मतलब would we फार्मर have been surprised if we would have been five? I we would don't have been think so. We would surprised have been by not surprised. not surprised by City's dominance. The surprise would be the lack of competition, right? But Um, like, so I was having this chat with my other group, hmm, and the thing is that if Arteta has to match Klopp's legacy in the Premier League, all he has to do is win one Premier League. That's it.
Hmm. and And you're like, champions and no, Champions League. in the Premier League, in the Premier League, as a Premier Hmm. League manager. Hmm. As a club manager, though, Klopp, I would say, will take a while. Um, Hmm. yeah, but Model Model Puddle Panda says Liverpool 34, Arsenal 25, too much gap. I don't know. I just feel with I mean, again, Slot Okay. could turn I out to think be it that. is only Yeah. possible if Liverpool has like two, three injuries in it, right? No, no, yeah, yeah, yeah. But And I then you don't even might hope see for. a dip in their form or something, or else I don't see them losing right now. And that form dip in form has to be has to coincide with Arsenal being in form. Huh. So That's the whole. no. See, my point of whole thing about Arsenal is at this moment is for last two seasons you have been the second best team, and in both the seasons you had the opportunity to win the league. Oh, Oh, only if Carragher De Bruyne has was been as talented as Saka, this would have been a goal. Arre, as talented as Ahmad, this would have been a goal. uh Van Dijk has sometimes he makes crazy errors. That you can't even associate with him. But Hmm. that was just poor. Sorry, Yeah. Akash, you were saying. So I was saying that आर्सेनल के अगर तुम लास्ट तीन सीजन देख ठीक है थर्ड Oh, लास्ट थ्री सीजन बैक दे शुड हैव मेड टू द चैंपियंस लीग वेरी इजीली right, ठीक right. है बंडल्ड इट एट द लास्ट तुम पांच में चार या पांच में से उन लोग को एक मैच जीतना था एंड दे डिड नॉट विन वन मैच ठीक है दैट इज जस्ट too bad of a record. Okay. Then the next season comes, they have a 10-point gap at a certain point for, from City, right? And they lose that gap Mhm, also, mhm. right? And just lose out There was on. no. There was no 10-point gap. There was There was always a no, five. at No, a no, no. moment, it Arey, was 6 points gap. Ka. Ha. the 8-point gap was with City having games in hand. So Hmm. City had two games in hand, and people kept saying, and that too because क्या था? I'll tell you. In 2022, we were still having those COVID breaks. Hmm. So there were matches getting rescheduled. And Hmm. City के दो साला matches को were जो सब किया मारने देते उसको एक और City के दो matches were pushed. hmm. So because of that, what happened was that we were always two matches ahead. So But we I'm were pretty sure they had a good lead going into towards the max was end. 5 points. हाँ Max was ठीक five है points. तो हाँ. you should have not lost that. ठीक है No, again and we we did the lost same both thing. our matches versus City. हाँ That's what happened. Yeah. ठीक है and then Hmm. even the last season ठीक है you had the chances to win the league Hmm. but last season I'm still okay मतलब ठीक है City was just you know there was no competition left after a while कि चलो तुम इतना नहीं हगे City was so good. Now Yeah, this it came season down to 2 points. Yeah, yeah, yeah. ठीक है now this season where you have been there for two seasons and you've competed with Hmm. them. I don't know, did you guys invest this season? Yeah, I think I we एक जो got वो more डिफेंडर लेके आए थे I remember that only वो Calafiori. कॉलीफ्लावर हाँ Calafiori and Mourinho were the notable signings. हाँ ठीक है और कोई तो ऐसा बड़ा okay so साइनिंग नहीं था बहुत. मतलब you just made some tweaks over here and filled some gaps Backups. Yeah, right, right, backups right. in, Backups. right? But you already had a good starting lineup. Yeah, yeah, Okay. yeah. Now, when the downfall came for City, you should have been the team who was just up there. Instead, Liverpool were instead there also is there. Hmm. instead there is a team who has had their manager just this season. So what's No, the no, point that's of true. having That's a true. manager which you have stayed with for 6 years? When the fall has come, finally the fall has come, he is not there to take the advantage of it. You can point it out But that that's the Odegaard ka injury and all of it, but no, 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 no. I will say that the fall has come, but at the same time, we have to see. Look, they have been consistent. These players have been playing together for a while. Liverpool have literally had no signings, so I'm not hmm, going to say that that that's an excuse. We did they had fall one off, but signing, Chiesa, but I get your point. कौन सा Chiesa from Oh, Juventus.
K I था. haven't even seen him. Yeah, I हाँ. haven't seen. I love that player, but I haven't seen him play Hmm. for Liverpool yet. So I wanted us to sign him actually, because but before the injury, the chance is gone for not Hmm. happening. But no, but I still feel that the title is far from over. And That is true. But yeah, मतलब, I mean, you we keep still have saying, you still have it like so much in others' hand, right? My but thing what is if your what if destiny what should if have not Liverpool lied in someone what if else's hand. Liverpool goes on a 5 game, not losing streak, but 5 games without a win. Agreed. Suddenly City, yeah, and that can happen, is They what I'm it saying. can happen. Okay. Right. So Abhi Did though, you see what Pep did? no, what happened? Did he cut his nose off or No, something? no. I think the fans were just going after him and he just showed them six. Liverpool fans. I mean, honestly speaking, except for United, no fans should be doing that to City's manager. And I say that with respect to United. But काम मोरिनियो के ही ट्रिक्स आते हैं, काम तो सारे मोरिनियो के ही आते हैं। ये क्या क्या सीखा कहाँ अरे से? हाँ, सीखा कहाँ, अरे यार, शिट, नेवर एक्सपेक्टेड I'm, पेप टू बी डू दिस मैन। चलो ठीक Pep है। is also so loser. He's not हाँ, classy guy in any means. आई एग्री, मतलब चलो ठीक है यार, जीता भी तो है। हम्म, I mean, like, if anyone has a standing कि भाई वो show off कर सकता है तो it is Pep at हम्म। this moment. हाँ वही वरना थोड़े 6 सीजन में एक FA कप वाले मैनेजर वही। करेंगे. No, definitely. Arteta can't do it. And even if he wins this year, he can't do it. I think, mm, and honestly यार, आर्सेनल का टीम बहुत अच्छा है इस मोमेंट पे. So Mhm. we need to get more out of them. And then eventually what they do, Arsenal, every season is, last 2 seasons at least they've done that. They mentioned that we are prioritizing Premier League. नहीं है? And you have come out of all the other competitions. When you're playing so well, you need to win continuously. Something you need to win just so that the players also stay motivated. Because after a while, if you keep playing well and you don't win anything, players also start to leave or get demotivated and just lose hope in it. Yeah, no, unlike last year, I think this year, if we go without a trophy, I think Arteta will have an issue saving his job. He'll come to his job. I Um, doubt it would be. no, I really doubt. it will, because I think next summer there will be a pool of managers to pick from as well. So it will again coincide with the fact that this person, Ancelotti might be available. There might be other managers that might be available. So, uh, and why not take them then? Because the team is really good. But I think it's also good because we play the way Arteta wants us to play. So that's also there. Hmm. Yeah. I think we need a backup for Odegaard, Saka. I think we're still short on some areas. Uh, and we need a striker, which all of us know. So I think if we get two out of those three players, then Because, yes, Kudus has been. how have you not identified that you need a good striker? No, That we've is, known that. but then Fans know how have that. you not Everyone knows that. act on it? Well, that I don't know. Yeah, that. And people are like, why did we let Nketiah go? I said, because he was never the answer. Like, I was like, what are you talking about? हाँ, but then it is also no part कि जहाँ पे अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, तुम उसको 2 मार्क का तो लिख सकते हो ना उससे. तुम 0 छोड़ो, उससे अच्छा तो 2 मार्क का लिख के आओ. ऐसा नहीं. So when we sold him, we got like 30-40 million for him. So Hmm. now what we can do is we balancing out the book sort of a thing. So maybe in January we might be able to invest that. Is See, what I'm what, thinking. like if Arsenal would have had aspirations to be a top club, ठीक है, Hmm. what I genuinely feel is they would have done anything to make that Victor Osimhen का deal happen. अरे he didn't want to come. No, उसको अरे ही नहीं he आना was तो हम ready क्या to करें? go to Chelsea. Why not Arsenal?
अरे चेल्सी जितना पैसा नहीं है हमारे पास। जो भी बोलो, चेल्सी आर स्टिल वेरी रिच। हाँ वो स्टिल क्या तो तो लाइक हाँ। चेल्सी का रिचनेस तो क्या है, वो तो उसके फैंस और वो दोनों रिच ही रिच है। ट्रेन से अभी आ रहा हूँ मैं। अभी तो देख उसका गिफ्ट देखना, अभी तो वेडिंग के लिए हनीमून हम्म। गिफ्ट कर रहे हैं। वो कहाँ कहाँ मार दे मार दे, यहीं से मार दे। ओए अरे, नहीं, ऑफ साइड है, यहीं से दिख रहा है मेरे को यार, और तुम मिस कर इफ दिया तो भी चल रहा उसने अभी तक नहीं देखा, इफ अवॉइडिंग सर्टेन थिंग्स वाज एन आर्ट, नो, देन डीजे इज अ पिकासो ऑफ इट। कौन सा आर्ट? है। अवॉइडिंग थिंग्स। कौन सा एक कौन सा अवॉइड किया मैंने? Also, भाई साहब। I heard, Did Haaland have you a know, single chance in this game? Not that I remember of. या वन not, चांस ऑफ not that I कंट्रोलिंग remember. फुटबॉल। हाँ याद आया, एक आया, yes. You were saying something, sorry, Parth. No, you Is guys, Sterling a striker? No. no, no, no. हु इज द Winger, winger. स्ट्राइकर? Sterling. Sterling. वेरी गुड स्ट्राइकर, बेस्ट एवर। Yeah, I can't believe that he's played for, except for United, he's played for all the top level, like Liverpool के लिए खेल लिया, चेल्सी के लिए खेल लिया, City आर्सेनल खेल के लिए लिया, खेल लिया, Arsenal खेल लिया. सिटी के। But And I I don't see Arsenal retaining him. no, Yeah. already the news is out that we'll And not be. how does Chelsea gets this help all the time यार, जब भी उनको कैसे उन लोग को मिल जाता है? कुछ तो है यार, that पता है, even अगर अगर माउंट और ये काई हेवर्ट्स नहीं साइन किए होते यूनाइटेड आर्सेनल ने इतने महंगे, चेल्सी वुड हैव बीन डीप ट्रबल लास्ट सीजन. वो लोग कुछ साइन ही नहीं कर पाते. नहीं नहीं नहीं, so I think I was reading something about that वो क्या there's भाग this रहा है भाई साहब। चलो खत्म होने वाला है चलो मैच अभी। हाँ। हम्म. What did I predict? Did I predict 3-0 या 3-1? 2-0 किसी ने नहीं किया था, मैंने 2-2 हाँ किया था आई थिंक। आई नहीं, सिटी है वो तो जीरो, तो आई मीन इट्स बैक टू अब बैक वही मैच। मैं बोल रहा हूँ 22 ना, break. मैं वही I बोल रहा हूँ दैट। I predict 4-1. अरे यार, सर ने ये भी बहुत ज्यादा गोल मार दिया ना यूनाइटेड. कौन? दो गोल पे यूनाइटेड? हाँ रहते, चुपचाप औकात पे रहते. नहीं, चलो भाई। अच्छा है, यू गाइस विल एटलीस्ट हैव पॉजिटिव गोल डिफरेंस मैन। Uh, अरे we चलो। are तो after a long time, I think after game week second or third, we are first time in top 10. अरे वी गॉट टॉप 10, नाइस नाइस। Yeah, nine. uh, कितने पॉइंट्स है इस वीक? We'll just discuss that and close the stream. हो गए आई ना सारे मैच खत्म? So I have, मेरे को कल पूरे दिन में 1 पॉइंट मिला था. 2 पॉइंट मिले थे आफ्टर आर्सेनल मैच. नो पॉइंट्स इन चेल्सी मैच, नो पॉइंट इन टॉटनहम मैच. 4 पॉइंट्स जस्ट. मेरे को है। अरे यार रिजल्ट क्या है? फिर वो कल तक 5 पॉइंट थे. 6, 7, 8. यू हैव 8 पॉइंट्स टोटल. ऐसा है क्या? चलो I आज। think my week wasn't that great, but let's see. So I have results सारे देखते हैं पहले। आई थिंक यू हैड PL 2 पॉइंट्स, 2 or 3 पॉइंट्स अंटिल यस्टरडे. results. How did Southampton or Brighton not beat Southampton? I don't know. One. Oh, I didn't predict United to win. वन, या यू प्रेडिक्टेड 2-2 फॉर यूनाइटेड. फोर, फाइव, सिक्स, चल डीजे तू कंफर्म कर लेना तेरे पॉइंट्स, मैंने सही तो गिने ना. Two, three, सेवन, एट। आई हैव एट। हम्म. four, five. I have five points. तो द टोटल इज फॉर यू 84. डीजे पहुंच गया 76 तक. Hmm. हम्म। डीजे के बहुत पॉइंट्स हो गए. मेरे अभी भी कितना दूर हूँ मैं?
आई एम एट 112. ठीक है, अभी मिडवीक के भी भेज जल्दी कर देंगे ताकि वी डोंट मिस इट. So 26. I think we'll just try to come online for certain time United versus Arsenal के मैच के दौरान या बाद या कुछ, and we'll be together only. So hopefully Well, too much fun, or hopefully we'll oh see at yeah, that time. Hmm. Okay. yes. Yeah. Okay, guys. Thanks All for right. joining Bye us. guys. So Thank you thanks, everyone. guys. Bye bye. Bye.